polygon primitives. First, I'll select the polygon cylinder primitive from the modeling tool shelf. Then I'm going to edit its properties. I can do that by going to the attribute editor and then selecting polycylinder 1. Here I can change the radius to 4 centimeters, and I can change the height to 10 centimeters. For the subdivisions on the axis, I'm going to change this to 12 because we can smooth it more later. We want this to be a multiple of 4 so we can add quads to the base. The subdivision height, I'll leave this at 5. And then for the subdivision caps, I don't want any caps, so I'll make that 0. And that just deletes all those. Then on P cylinder 1, the very first tab, let's translate it up 5, and that'll put it on the ground. Now right-click to go to face mode. Select the top face and delete it. Orbit around to look at the bottom face. You can hide the grid temporarily by clicking this button in your panel. Select this face, then press Ctrl-E or Command-E to extrude. Select any of the scale icons on any axis. Then you have a universal scale in the middle. Bring the edge in. Press G to extrude again. Click the scale control on any axis, then scale in. Then hold Shift and right-click to get the multi-cut tool. We need to make quads out of this. The easiest way to do that is to draw a line in the middle and then connect the perpendicular lines. Sometimes it's hard to select a vertex, so if you click and hold on an edge and drag to that vertex, it'll automatically select it. And then remember to right-click to accept. So again, I'm going to drag to the vertex, right-click to accept, drag to the vertex, right-click to accept, drag to the vertex, right-click to accept, and then we have quads on all of these pieces. Press Q to deselect the multi-cut tool. Now I'm going to rotate around and look at this object. Next, we can smooth this whole object by right-clicking and going to Object Mode, then clicking Smooth. Now we want to make it have some thickness. To do that, we can press Ctrl-E or Command-E to extrude. And this time, on the thickness, we're just going to type 0.3. Now we have some thickness to our object. And as you can see, our bottom is filled with quads, so it's easy to manipulate. Press Q to deselect. If we press 3 to smooth, notice that the top of our cup is very sharp. We can stop that by adding some edge loops. So press 1 again, then hold Shift and right-click to get the multi-cut tool. Hold Control and you can insert edge loops very quick. Press Q to deselect the multi-cut tool and then orbit to the bottom of the cup. Coffee cups aren't perfectly flat on the bottom, so we want to raise this up. Hold the Tab key and paint a selection down here. And then we can hold Shift period to grow our selection. We just need to select a few more places, so we can hold Tab and paint in these places. Once I have this section of faces selected, I can press Ctrl-E or Command-E to extrude. And this time I'm going to go up in this direction, in the Z direction. And we know that our wall thickness is 0.3. So let's just go up -0.1. So just a little bit. So in some ways, this is going up 1 millimeter. And then we have that extruded there. So I'll press Q to deselect. And then I need to add an edge loop to the bottom of this cup, because if I press 3 now, it gets a little strange and rounded. So press 1 and then hold Shift and right-click to get the multi-cut tool. And then hold Control and I can add an edge loop here, one here, and one here. Now if I press 3, this looks more like a cup with a recessed bottom and a foot. So I'm going to press 1 again to go back to the polygon mode. Press Q to deselect the multi-cut tool, and I'm going to show the grid again. Now what we need to do is add a handle. It's easiest to add a handle if we do it on a grid line like this, so I'm going to do that. What I want to do is Shift select 4 squares at the top, and then Shift select 4 squares on the bottom. And then notice how this axis, the Z axis, goes right through the middle. If I hold Shift and right-click, then I can circularize my components. They'll come in a little twisted, so we can use this twist command to just kind of even them out. About 2.2 at this size works, but your model may be different. And then if you notice when I rotate that it looks a little dented. So what we need to do is change the alignment to surface average. That will keep it having the curve of the cup. And then we need to delete them. Make sure you don't select any faces in the back.
After this, right-click to go to edge mode, then double-click the top edge loop of this handle part. We'll press Ctrl-E or Command-E to extrude, click one of these handle components, and then we can scale in. Then double-click to select this edge loop, press Ctrl-E or Command-E, select one of the control points. Now I can scale from the middle, and then scale that in. Press Q to deselect, and now I can double-click these and scale them to the size that I want a little bit more easy by pressing the R key, and I can scale from the center and bring these in. You can double-click this one and scale it in, and then you can make these the size that you want for your coffee cup handle. Next, press Q, and I want to double-click this edge loop, hold Shift, and double-click this edge loop. We want to make a handle. We can do that very simply by going to Edit Mesh Bridge, and then make sure you click on the box. If your tool is not reset, you can go Edit, Reset Settings. We want to make sure we pick Smooth Path plus Curve. We also want to pick Custom, so they both go out. And then we can decide how many divisions we want. I'm going to select 10 divisions, and then click Bridge. So now we see that we have a handle coming out of our coffee cup. But if you notice, it's very shallow. So how can we edit that? Well, let's look over at the polycylinder. Notice that now it has a child of curve 1. I'm going to press Q to deselect. And then, if I go to Object Mode and I press 4 for X-ray, you can see that there's a curve on the inside. So if I select this curve, suddenly we can see this curve. Now I can right-click, go to Control Vertex, and if I select these points and press W, I can move them around, and notice how it changes the shape of my handle. I can have this be any shape that I want. Now I can right-click, so then edit the handles for how you want it to be for your coffee cup. There's one other thing that we can do before we're done with this cup. I'm going to press 5 to go back to shaded mode. If I select this object, notice that we still have our history. Normally we want to delete our history when we're done, but while we're editing, it can be very helpful. So if I select Polybridge Edge 1, notice that there's a taper command. So now I can decide if I want to taper it out like this, or more likely, taper it in just a little bit. And you can see how that makes just a nicer coffee handle curve. Now I can hold Shift and right-click and go to Multi-Cut tool. Remember, I hold Control to add in edge loops. I'll put an edge loop here and an edge loop here. So if I press 3, this looks pretty good smooth, but I want it to be smooth all the time. So I'll press 1, right-click to go to Object Mode, press Q, then we can click Smooth just one time. Off-click. Now we have a nice coffee cup that has a quads on the bottom and everything looks really nice. I'm going to click the front camera, then middle mouse button, drag it in. I'm in object mode right now, and I want to press the W key. Right now, the pivot point is in the middle. I'm going to press and hold the D and V key, dog and violin, and then I'm going to drag down to the very bottom. If I zoom in, I want to make sure I drag all the way down to that bottom vertex. Then if I hold the X key, I can snap to the grid, and now I know I'm right on the bottom of the grid. Next, I can go to Edit, Delete by Type, History, and then I can go Modify, Freeze Transformations. Hold the middle mouse button to drag the perspective view back in, orbit around, and now we have a nice coffee cup. I'm going to right-click on it and assign a new material. I'm going to assign an Arnold standard surface, then select the presets, ceramic, replace, and now I'm ready to save this coffee cup for import into any scene that I want. Hopefully this shows you how you can use the bridge command, plus make quad surfaces on your cylinders when you need to. Happy 3D modeling.
4 ट्रेल मिक्सेस, एक ट्रेल मिक्स ट्रेल हेड मॉडल्स का एक कलेक्शन सीख जाएंगे। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए उम्मीदवार को सभी ट्रेल मिक्स को कंप्लीट करना होगा और इसके लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है। अगर बेनिफिट की बात करूं तो जो भी फर्स्ट 2 ट्रेल मिक्स को पूरा करता है उनको सेल्स फोर्स की एक ब्रांडेड बोतल भेजी जाएगी। इसके अलावा जो पहले 100 लोग इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे, यानी 4 ट्रेल मिक्स को, कई बार लोगों की वीडियो वायरल नहीं होती और उनको निराशा होती है कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने सेम टॉपिक पर वीडियो बनाया, क्वालिटी अच्छी रखी, सेम मैंने कीवर्ड भी डाले, मेरा क्यों वायरल नहीं हो रहा? अब ये इंप्रेशंस कम क्यों जा रहे हैं आपके जब ऑलरेडी ये वीडियो वायरल है? तो यूट्यूब यही कहता है। मान लीजिए कुछ क्रिएटर्स ने कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई और उनकी वीडियोस वायरल हो गई। उन्होंने 1 साल पहले बनाई, 6 महीना पहले बनाई या 2 साल पहले बनाई, लेकिन वो वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आया। अब आपने सोचा कि भाई इन वीडियोस पर तो बहुत ज्यादा व्यूज आया है, लोग इनको बहुत देखना पसंद करते हैं, क्यों ना इसी टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूं। और आपने ऐसा कर भी दिया, आपने एक वीडियो क्रिएट किया और उन जो क्रिएटर्स थे जिनकी वीडियो ऑलरेडी वायरल थी, वही कीवर्ड आपने भी अपनी वीडियो में सेम इस्तेमाल करे और वीडियो की क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी। उसके बाद भी आपकी वीडियो पे बस 10-20 व्यूज ही आए। क्यों आए? आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई उसकी तो वायरल हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? तबकि टॉपिक भी सेम था और कीवर्ड भी सेम थे। अब इसके पीछे क्या मेन रीजन होता है और YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसको समझने वाले हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अभी से लाइक करता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। अगर आप फ्री में कुछ सीखना चाहते हैं और सेल्स फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भारत में सेल्स फोर्स इकोसिस्टम में करियर स्टार्ट करने का जर्नी टू सेल्स फोर्स एक बेहतरीन तरीका है। पहला तो ये ऑनलाइन है, कोई डेडलाइन नहीं है और यहाँ पर सर्टिफिकेशन वाउचर, और खास बात इसकी ये है कि ये भारतीयों के लिए है, कर सकते हैं। जो क्लाउड जैसे पढ़ाई के लिए ब्रेक लेने वाले यूपीएससी ट्रेल मिक्स ट्रेल हेड को सभी की बात करो, बोतल मिक्स को पूरा के अलावा हर महीने मिल जाती है, अधिक में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं जो भी बातें बताने वाला हूं इसमें थोड़े उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे समझना हमको ये पड़ेगा कि मैं बहुत सारे संडे को चैनल चेक करता हूं और मैं देखता हूं कि वो लोग किसी ना किसी से इंस्पायर होकर अपना वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। अब YouTube पर किसी से इंस्पायर होना, किसी बड़े यूट्यूबर की कॉपी करना आम बात है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई बंदा वीडियो बनाएगा तो नॉलेज कहीं ना कहीं से तो लेगा। अब ऑनलाइन अगर कोई डिजिटल की नॉलेज दे रहा है तो उसको नॉलेज भी डिजिटल से लेनी पड़ेगी, तो ये एक बिल्कुल आम बात है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया किसी टॉपिक पर, इस टॉपिक पर ऑलरेडी 5 ओल्ड क्रिएटर्स की वीडियो वायरल है और मैंने सेम टॉपिक पर वीडियो बनाया, क्वालिटी अच्छी रखी, सेम मैंने कीवर्ड भी डाले, मेरा क्यों वायरल नहीं हो रहा? तो यहाँ पे YouTube ये कहता है कि आपकी जो वीडियो वायरल होती है वो होती है आपके इंप्रेशन की वजह से, यानी YouTube आपकी वीडियो के इंप्रेशंस भेजता है लोगों को, यानी लोगों के सामने वो बार बार वीडियो दिखाता है। जितनी बार लोगों के सामने वो वीडियो जाएगी उतने ज्यादा आपके इंप्रेशंस बढ़ेंगे और जितने ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे उतना ज्यादा आपका CTR बढ़ेगा और जब ये दोनों बढ़ते हैं तो आपकी वीडियो पर व्यूज बढ़ते हैं। अब ये इंप्रेशंस कम क्यों जा रहे हैं आपके जब ऑलरेडी ये वीडियो वायरल है, यानी इसकी ऑडियंस है? तो इसमें सबसे पहले जो YouTube पहला जो टिप देता है वो ये कहता है कि आपका जो टॉपिक सिलेक्शन है वो कौन सा क्या है वो आपको चुनना पड़ेगा कि आपने कौन सा टॉपिक लिया है। अब आप कहेंगे भाई मैंने तो वही टॉपिक लिया है जिसपे ऑलरेडी लोगों की वीडियो वायरल है, तो मेरा टॉपिक बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे YouTube एक बात ये कहता है कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं किसी क्रिएटर की देखकर, और उस क्रिएटर ने वो वीडियो बनाया 1 साल पहले और उस टाइम उसका वायरल हुआ, अब उसी टॉपिक की डिमांड आज के टाइम जब आप बना रहे हैं तब कितनी है? तो यहां पे पता चलेगा कि आपका जो टॉपिक है वो एक सही टॉपिक है या नहीं। अगर आपके पास ऑडियंस है, मान लो बहुत सारी ऑडियंस है, जब तो हो सकता है आपको व्यूज मिल जाए क्योंकि आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो देख लेगी, बट आप एक नए क्रिएटर है और आपने इस ओल्ड क्रिएटर के एक टॉपिक को चुना और सेम वीडियो क्रिएट की, सेम टाइटल, सेम कीवर्ड वगैरह लगाए, लेकिन जब इसने वीडियो बनाया था उस टाइम इस टॉपिक की डिमांड थी, अब नहीं है, तो आपकी वीडियो डाउन रहेगी, बहुत ज्यादा वायरल नहीं होगी। तो पहला तो YouTube यही कहता है कि आपका जो टॉपिक चुन रहे हो आप, उसमें यह देखिए कि जो टॉपिक मैं चुन रहा हूं इसकी डिमांड क्या आज भी है। इसको YouTube सीजन के हिसाब से लेता है कि हर टॉपिक के कुछ सीजन्स होते हैं, किसी सीजन में किसी टॉपिक की डिमांड थी लेकिन अब वो नहीं है। तो आप करंट में सोचिए कि अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा इसकी डिमांड अब है कि नहीं, अब ऑडियंस इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी। अगर आज की डेट में भी इस टॉपिक पर ऑडियंस नई इंटरेस्ट ले रही है तो आप नए क्रिएटर हैं तो भी आपका वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब यहां पे एक बात और आएगी और वो है कंपटीशन। देखिए किसी ने मान लो 1 साल पहले एक टॉपिक पर वीडियो बनाया, आप आज बना रहे हैं, तो इस कीवर्ड पर कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है उसमें लोगों का आज भी इंटरेस्ट है
और लोग उसे सर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास तो ऑडियंस है नहीं, और एक ओल्ड क्रिएटर उस वीडियो को दोबारा भी बना देगा तो उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, तो बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी देख लेंगे, बट आप बिल्कुल नए हो। तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना है। अब एक कंपटीशन कैसे चेक होगा कि भाई मान लीजिए कीवर्ड को सर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कीवर्ड पर टोटल वीडियो कितनी बनी हुई है, यानी इसका जो कंपटीशन है वो लो है या हाई है। अगर लो कंपटीशन का आप कीवर्ड चूज कर रहे हो और उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी आज के डेट में है और कंपटीशन भी लो है, तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि यूट्यूब ने खुद यूट्यूब के अंदर भी एक टूल दे रखा है, रिसर्च टूल, उस पर भी जाके आप ये सब चीजें रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा ट्यूब बड़ी विडाई को जैसे टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां से ये सब चीज आपको पता चल जाएगी। और YouTube ने ये सारी चीजें इसीलिए बताई है क्योंकि सेम टॉपिक पर कई बार लोगों की वीडियो वायरल नहीं होती और उनको निराशा होती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो उसकी वजह यही होती है, टॉपिक, इंटरेस्ट, करंट टाइम, प्लस आपका कंपटीशन कितना है, और तीसरा क्वालिटी है जो आपने अगर ऑलरेडी दे दी है। सेम कीवर्ड पे अगर सेम वीडियो आप बना दोगे, ऐसा करने से अगर वीडियो वायरल होती तो बहुत सारे लोग ये इजीली कर लेते और उनकी वीडियो वायरल हो जाती। यानी कुल मिला के अगर पूरा का पूरा वीडियो का एक तोड़ निकाला जाए एक लाइन में, तो सिंपल सा एक ही बात निकलेगा कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक का इंटरेस्ट कितना है लोगों में, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। यानी CTR, थंबनेल, वीडियो क्वालिटी, ये सब बात की चीजें, जिस टॉपिक पर आप